Good morning, guys. Today we are going a new chapter that is called relation and function, which is very important chapter for the 12th. Remember it. Also can say it is heart of the maths. It is heart of the maths. Remember it. For whole maths, it is very important chapter. All the theories, all the properties, all the working rules, all the process, all the operations, everything is important. Remember it. Now there are two topics. Actually, there are two topics: relation and function. In function, there are so many topics. So first of all, we will start from the relation. We will discuss today the relation of 11th. Then we will start of the 12th. Right? So 11th में जो आप रिलेशन पढ़े हुए हो वो थोड़ा नहीं पूरा ही रिवाइज हो जाएगा, 10-15 मिनट का ही है, ज्यादा नहीं है, क्योंकि 11th में उतना ही था. जस्ट टेस्ट करने के लिए हमें दिया था. टेस्ट तो किया था पर अभी टेस्ट याद नहीं है, तो वापस टेस्ट करेंगे, रीटेस्ट. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रीटेस्ट. रिलेशन. There are so many meaning of relation, but we are going to talk about the relation of only the mathematical relation की ही बात करना चाहते हैं हम. So don't bring the questions of your relations. Only we will discuss here only and only the mathematical relations. Remember it. No other relations. Don't bring here. Right? Now relation, the definition. Let A and B. Let A is non-empty set and B is non-empty set. B sets. Now you know the Cartesian product. Cartesian product में क्या होता है? If X has two elements and if Y has AB, so the X cross Y, that is called Cartesian product, वो बनेगा 1A, 1B, then 2A, then 2B. You know it very well because ये आता है 8th या 9th में और 11th में भी आप कर चुके हो. So any subset of A cross B, any subset of A cross B is called relation from A to B. Any subset of A cross B, whenever A and B are non-empty sets. So any subset of A cross B is called relation from A to B. If I say any subset of B cross A is called relation from B to A. If I say A cross B, then relation will be from A to B. And if I say B cross A, the relation will be from B to A. Right? So now by illustration, we want to study this topic. See, the set A has suppose 3 elements 1, 2, 3, and B is containing 4 and 5. So A cross B now you know, बारी बारी सबकी बारी, तेरे बाद मेरी बारी, सभी एलिमेंट्स के लिए we will get the order pair 1 4, then 1 5, then 2 4, then 2 5, then 3 4, 3 5 over. So how many elements
are in A cross B. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So we have a formula. See, number of A cross B, it means number of elements of A cross B. It means number of elements of A cross B, that is number of A and number of A. Number of A is 3, number of A is 2, 3 2 is 6, so it has 6 elements. ये भी आप जानते हो. Now, you know the formula for number of subsets. Tell me, how many subsets are there? Set A has. Set A has how many subsets? How many subsets B has? We have a formula. If n is number of elements of any set, then number of subsets will be 2 raised to n. The formula 2 raised to n gives number of subsets. ये भी आप जानते हो because यहाँ पे सब कुछ अभी रिवाइज हो रहा है. So A cross B is one of the sets. It is Cartesian product. So it has order pairs, but these are called the elements. Now A cross B has 6 elements. If A cross B has 6 elements, then total number of subsets will be 2 raised to 6. 2 raised to 6 मतलब होगा 64. So what is the definition? Any subset of A cross B is called relation from A to B. A cross B has only 64 subsets, means there are 64 relations. There are only 64 relations. Getting or not? A cross B के लिए हमें 64 रिलेशंस मिलेंगे. सारे रिलेशन मुझे डिफाइन करने हैं. See, the notation for relation. There are two ways to represent the set. Set builder form means property method, or roster form means listing method. Set builder is called property, roster is called listing method. तो मैं अभी आपको set builder form में दे रहा हूँ. See, the notation for relation is R. Any subset of A cross B. If the set is subset of A cross B, set contains order pair. तो यहाँ पे मैं एक रिलेशन डिफाइन करने जा रहा हूँ. Order pair AB. For particular A cross B, I am going to define the relation such that A square plus B square is greater than or equal to 25. It is one of the relations. ये जो यहाँ पे हमें 64 रिलेशंस मिलेंगे, उसी में से ये कोई एक रिलेशन है. अब यहाँ पे इसके एलिमेंट्स भी मुझे डिफाइन करने हैं. क्या हाउ मेनी एंड विच एलिमेंट्स यहाँ पे है, राइट? सो चेक इट. जो एलिमेंट ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, इट विल बी द एलिमेंट ऑफ दिस रिलेशन. आस्क टू 1 4 1 square plus 4 square 1 plus 16 17 is greater than or equal to 25, which is not true, so will not come. Ask to 1 5 1 square plus 25 square, so 1 plus 25, that is 26, which is greater than 25, so 1 5 will be the element of this relation. 2 4 will not come. 2 5 will be the element. 3 4 आएगा. 3 square plus 4 square
9 plus 16, 25. Equality is there. So 3, 4 will be the element of this set, and 3, 5. So it is one of the relations. Getting or not? It is called relation from A to B. By this formula, by this process. Now second relation. Chalo, we will say R1. Now second relation. R2 is equal to set of AB such that 2A plus 3B is less than 10. This is also one of the relations. Now all those elements will be here which satisfy this inequality or condition. Chalo, taking 1 4 1 4, 2 1s are 2, 3 4s are 12. 12 plus 2 14 is less than 10, which is not true. So 1 4 will not come. Okay, what about 1 5? Will not. So no element will be there. Means it is null relation. It doesn't have any element. So it's called empty relation. Or null relation, or void relation. Null relation, empty relation, void relation. It is relation. One more relation. See. R3. Set of AB such that 2A plus 3B greater than 10, 2A plus 3B greater than 10. Now asked to 1 4 by any subset of A cross B. So asked to 1 4. Is there 1 4? Check it. 1 4, yes. So it will be there. 2 5, yes. Sorry, 1 5. Then 2 4, yes. 2 5 is also. 3 4 and 3 5 are also the elements of this set. It means that it is whole A cross B. It is whole A cross B. So when R is equal to A cross B is called universal relation. Is called universal relation. So there are 64 relations. Among them, this is void, means null, means empty, universal relation. ये भी एक है और 61 बचे वो सारे all the relations we will say regular relation in our words. बुक में कुछ नहीं दिया है पर ये दो particular है. If R is A cross B is called universal relation. If R is empty so is called empty relation or null relation or void relation. Now domain. चलो one more topic. Domain for R1. डोमेन ऑफ R1. अच्छा, R1 में जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितनी भी ऑर्डर पेयर है, उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट से सेट बनेगा दैट इज कॉल्ड द डोमेन. सो 1 2 3 3 मींस 1 2 3. रेंज ऑफ R1 एंड रेंज ऑफ R1. रेंज मतलब ऑर्डर पेयर में जो सेकंड एलिमेंट है उससे जो सेट बनेगा दैट इज कॉल्ड रेंज. सो 5 5 4 5 मींस ओनली 4 5. इट इज रेंज. चलो डोमेन
of R2. No element is there. Range of R2. Same for R3. Domain of R3. 1, 2, 3. All three elements. And range of R3. Same 4, 5. ये हो गई बात डोमेन रेंज की। अगर मुझे इन सभी रिलेशन को वेन डायग्राम से शो करना है तो इसके लिए क्या होगा? फॉर दिस रिलेशन, फॉर R1, सी इन डोमेन देयर आर 3 एलिमेंट्स 1, 2, 3. In codomain means range 4, 5. It is A, it is B, it is relation R1. चलो 1 is related with 5, 2 is related with 5, 3 is related with 4, 3 is related with 5. It is R1. चलो for R2, no elements, so it is R2. And for R3, 1, 2, 3, 4, 5. 1 is related with 4, 1 is with 5, 2 is with 4, 2 is with 5, 3 is with 4, 3 is with 5. This is relation R3, means universal relation. So ये जो सारी बातें है वो हो गई 11th की। Remember it कि any subset of A cross B is called relation from A to B. Clear point? Relation समझा दिए, empty relation, null, void, universal relation, regular relations, domain, range, and Venn diagram. Right? Now we are on the door of the relation and function of 12th. 12th का जो relation function है उसके डोर पे हम खड़े हुए हैं. We get the tickets to enter. चलो कैसे एंटर करेंगे? तो यहीं से स्टार्ट करते हैं. Any subset of A cross B is called relation from A to B. But if I say any subset of A cross A is called relation from A to A in the language of the 11th. When we have B is equal to A, when both the sets are same, so we will say any subset of A cross A is called relation from A to A. But in 12th, we will say not from A to A, we will say any subset of A cross A is called relation on A. This is the point. In 12th हमें यही लेना है कि दोनों सेट सेम होंगे. तो क्या होगा आगे? सी एनी सबसेट of n cross n is called relation on n. If we have z cross z, then we will say any subset of z cross z is called relation on z. Any subset of q cross q is called relation on q, and any subset of r cross r is called relation on r. So ये डोमेन हो गया. देखो यहां पे क्या था? A क्रॉस B डोमेन बन रहा था. अब यहां पे डोमेन बनेगा either n क्रॉस n और z क्रॉस z और q क्रॉस q और r क्रॉस r like that. Clear? So any subset of n cross n is called relation on n. Any subset of z cross z is called relation on z. Any subset of r cross r is called relation or r. So we will start from that. तो हम क्या बोलेंगे अब? R is relation on n.
If I say relation is on n, it means it is defined on n cross n. If I say relation on z, so the relation will be defined on z cross z. Relation is on r, so meaning will be there, it is on r cross r. It is on r cross r. Clear point. So we enter the relation and function of 12th, वहां पे हम एंटर हो गए. क्लियर. ओके, आगे. टाइप्स ऑफ रिलेशंस. रिलेशन की बात हमारी खत्म हो गई. टाइप्स ऑफ रिलेशन. तो अब हमारे सिलेबस में 3 रिलेशंस है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव. है तो बहुत ही बच्चों, पर आगे जाके वो धड़ाका बड़ा करेंगे. मतलब छोटी छोटी बातें, बड़े बड़े काम. दिखने में छोटा, काम उसका बड़ा. हमें ऐसा लगा ओहो ये तो बच्चों, पर आगे जाके इतना परेशान आपको कर दे कि नींद हराम हो जाए. हालांकि अभी नींद की बहुत मजा है ये टाइम में, पर हो जाएगी. ऐसा टॉपिक है. ये टॉपिक मैं बहुत ही शांति से लूंगा, बहुत ही स्लोली जाएंगे, बिकॉज इट इज वेरी 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 डिफिकल्ट. देखो अंडरस्टैंडिंग ही है, लिखना कुछ नहीं है. आंसर विल बी ऑफ 2 और 3 और 4 स्टेप्स, पर विदाउट अंडरस्टैंडिंग यू कांट राइट द आंसर. इतना है. सो इसे बिल्कुल लाइट मत लेना. राइट. चलो, फर्स्ट रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन. रिलेशन की बात मैंने खत्म कर दी. रिलेशन टॉपिक हमने देख लिया. नाउ टाइप्स ऑफ रिलेशन. दिस इज आवर फर्स्ट टॉपिक ऑफ 12th. वो जो भी सब कुछ मैंने करवाया है कि भाई रिलेशन, नॉन रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, रेगुलर रिलेशन, डोमेन, रेंज, वेन डायग्राम, एवरीथिंग, नंबर ऑफ सबसेट्स, एवरीथिंग, वो सब था 11 में. मैंने बोला 15-20 मिनट में रिवाइज हो जाएगा. हो गया. नाउ टाइप्स ऑफ रिलेशन. सो फर्स्ट रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन. रिफ्लेक्सिव मतलब जो खुद के साथ रिलेटेड हो, रिलेटेड विथ इटसेल्फ, दैट इज कॉल्ड. चलो, एक और चीज मुझे बतानी थी कि भाई इफ R is 1,4 and 2,5, it means in relation R there are 2 elements 1,4 and 2,5. So we can say 1 is related with 4 and 2 is related with 5. 1 is related with 4 under this relation and 2 is related with 5 under given relation. Right? So it is the notation to represent the relation also. इसमें बात ये होगी कि पर्टिकुलर एलिमेंट्स हम रिप्रेजेंट करेंगे. ये पूरा रिलेशन आ गया, ये पर्टिकुलर एलिमेंट्स है. तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेज टू रिप्रेजेंट द एलिमेंट्स. राइट. सो रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिमेंबर इट. Let R be relation on A, means the domain will be across A. R means relation. Let R be relation on A. For every A belongs to A. Universal quantifier, chapter number 14, standard 11, mathematical reasoning. Universal quantifier, for every, कोई भी एलिमेंट नहीं बचेगा. For all A belongs to A. If AA belongs to R, means A is related with A. AA belongs to R means A is related with A, then R is called reflexive relation.
then R is called reflexive relation. For every A belongs to A, कोई भी बचना नहीं चाहिए, उसके खुद के साथ सारी ऑर्डर पैर अगर रिलेशन में है, देन वी कैन से द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव. कितना इजी है. पर यही हवा निकालेगा. एक छोटा सा पंचर टायर में, एक छोटा सा पंचर पूरे टायर की हवा निकाल सकता है. सो इट इज लाइक अ वेरी स्मॉल पंचर. ये नहीं होने देना है आपको. रिमेंबर इट, राइट. सो बाय वन इलस्ट्रेशन, आई एम गिविंग यू some examples. First, set A has 1, 2, 3, 4. Now R is defined on A. If R is defined on A, means its domain will be A cross A. मतलब R में जितने भी एलिमेंट्स होंगे A cross A के होंगे. भाई A cross A में कितने एलिमेंट्स आएंगे? 4 into 4 16. There are 16 elements. हाँ. So any subset of this A cross A. तो 2 raised to 16 के कितने सबसेट्स हुए बताओ? All will be relation. उसमें से एक रिलेशन मुझे यहाँ पर डिफाइन करना है. R1 में उसे नाम दे रहा हूँ. चलो 1 1 1 2 1 3 2 2 2 3 3 3 3 4 4 1 over. It is subset of A cross A, right? It is a relation. Is R1 reflexive? So check this condition. Is R1 reflexive? Chalo. For every element of A, if A is there, chalo, for 1, yes, 1 1 is there. For 2 2 2 is there. For 3 3 3 is there. For 4, no order pair. So R1 is not reflexive. 4 4 does not belongs to R1. Therefore R1 is not reflexive. R1 is not reflexive. चलो second relation R2. For this set A, 1 1 1 2 2 1 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4. Ask to R2, are you reflexive? What is saying? Yes or no? Clear, very easy. बता दिया आपको उसने. क्या बोला? I am reflexive relation. Why? See, for all the elements of A, the order pair with itself should be in relation. Like 1 1, yes. For 2 2 2 is there, yes. For 3 3 3, yes. For 4 4, yes. So यहाँ पे आपको एग्जाम्पल या इलस्ट्रेशन नहीं देना है. यहाँ पे आपको जनरल फॉर्म में आंसर देना है. इन दिस देखो, अगर रिलेशन नहीं बन रहा है, then one illustration, one example is enough. But if the relation is there, we have to prove in 2 or 3 lines. 10 एग्जाम्पल्स दोगे तो भी नहीं चलेगा. प्रूफ इज मस्ट. सो मैं यहाँ पे प्रूव कर रहा हूं कि फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ, फॉर ऑल A belongs to A belongs to R2. Therefore R2 is reflexive relation. R2 is reflexive relation. Clear point? Done? Any doubt?
नो डाउट। तो अगर सारे एलिमेंट्स खुद के साथ रिलेटेड है देन वी कैन से द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। नाउ फॉर सिमेट्रिसिटी द सेकेंड रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। Symmetric relation. The definition for symmetricity: let R be relation on E. Let R be relation on E. For all AB belongs to A. For all AB belongs to A. देखो in first relation we have taken only the element one element. यहाँ पे मैंने दो लिए, थर्ड में हम तीन लेंगे. For all AB belongs to A. If means it is conditional statement, means implication. Remember it. If AB belongs to R, अगर ऑर्डर पेयर ए बी आर में है, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर दैट इंप्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर. सी बी ए का डिस्कशन हम तभी करेंगे जब ए बी आर में होगा. ऑर्डर पेयर ए बी ही आर में नहीं है, सो वी विल नॉट डिस्कस अबाउट द बी ए. क्लियर पॉइंट. इफ ए बी इन आर देन बी ए शुड बी इन आर. अगर ए बी है ही नहीं सो बीए के लिए हम डिस्कस ही नहीं करेंगे. सो इफ ए बी बिलोंग्स टू आर implies BA belongs to R means in another way if A is related with B implies B is related with A, then R is called symmetric relation. R is called symmetric relation. Clear point. See, if AB in R, then BA in R, then the R is called symmetric relation. तो अब यहाँ पे आएंगे, यहीं से स्टार्ट करते हैं कि भाई is R1 symmetric? Check it. 1 1 is there, 1 1 is there. Yes. For 1 2, is there 2 1? No. So clear. By for every element of AB, if AB is in R, then BA should be in R. 1 2 है, but 2 1 नहीं है. So we will write in R1. 1 2 belongs to R1, but 2 1 does not. Therefore R1 is not symmetric. Clear point. R1 is not symmetric relation. For so एक illustration काफी है. Only the one example is enough to prove the relation is not maintained. तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है. रिमेंबर इट कि इफ ऑल से यस मीन्स यस, बट इफ वन से नो मीन्स नो. दिस ओनली द एलिमेंट इज सेइंग नो. बात खत्म. सिमेट्रिसिटी वहां पे नहीं है, सो रिलेशन डज नॉट सिमेट्रिक. रिमेंबर इट. क्लियर पॉइंट. सो फॉर R2 what can we say about R2? चलो 1 1 is there, 1 1 is there, 1 2 is there, 2 1 is there, 2 2 is there, 2 2 is there. For 2 3, 3 2 does not, 3 2 does not. So यहाँ पे for the same कि 2 3 belongs to R2 but
3 2 does not belongs to R2, therefore R2 does not symmetric. सिमेट्रिसिटी नहीं है तो एक और मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं. सपोज सेट A has 3 elements. Relation R is 1 1 1 2 1 3 2 2 2 1 3 3 3 1 over. The relation is defined on A, means it has the elements of A cross A. इतने elements मैंने लिए. चलो, the first question is that is R reflexive? Ask to 1 1. Is there 1 1? Yes. Ask to 2. Is there 2 2? Yes. Ask to 3. Is there? Yes. So for every elements of A, order pair AA is in R, and therefore it is reflexive relation. It is reflexive relation. Getting or not? Chalo, for symmetricity, 1 1 is there, so 1 1 is there, changing the order. 1 2, so 2 1, 1 3, then 3 1, 2 2, then 2 2, 3 3, then 3 3. So for every element we have the element after changing the order. So we can write, see, if all say yes means yes, but if one say no means no. So for every, now we will prove here. देखो इन दोनों में मैंने इलस्ट्रेशन दिए, अब यहाँ पे हम प्रूव करेंगे कि भी इट इज बीइंग रिफ्लेक्सिव और सिमेट्री. सो फॉर एवरी AB बिलोंग्स टू A, if order pair AB belongs to R, implies BA belongs to R, and therefore R is reflexive relation. Therefore R is reflexive relation. Clear point. So today we discussed two relations. First, reflexive relation. Oh sorry, symmetricity discuss करनी है हमें. So R is symmetric relation. So today we discuss reflexive relation, symmetric relation, and we revived all the topic of the 11th. So आज के लिए मैं इतना काम रखता हूँ क्योंकि इसमें डेप्थ ज़्यादा है समझने के लिए. टुमारो वी विल स्टार्ट ट्रांजिटिव रिलेशन, उसके बाद में वी विल गो ऑन दी एक्सरसाइज 1.1. तो कल के लिए आपका इतना ही वर्क है. बाकी किसी पेरेंट्स का आपके फ़ोन आया नहीं है होमवर्क के रिगार्डिंग या एग्जाम के रिगार्डिंग, सो रिमेंबर इट, आज के आज फ़ोन पे बात करवा देना. In this week we are going to take the exam of chapter number 4 determinants and chapter 3 for combined, right? So revise it. Okay, see you, bye bye.